हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शनमैनिया। मैं हूँ आपका होस्ट उमेश। तो मैंने एक न्यू चीज़ देखी। न्यू चीज़ नहीं, वैसे बहुत पुरानी है, लेकिन और हम दोनों को पता है। मैं पाकिस्तान से हूँ, जो इंडिया से देख रहे हैं उनको भी पता है। बेसिकली आज जिस हम चीज़ पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब बात इंडिया और पाकिस्तान की आती है तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। भले वो क्रिकेट के लिहाज से हो, भले वो पॉलिटिक्स के लिहाज से हो, भले वो वॉर के लिहाज से हो। इंडिया और पाकिस्तान एक बहुत मेजर इशू है एशिया का। वैसे तो वर्ल्ड वाइड ही है ऑब्वियसली, लेकिन एशिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा मानी और जाने वाली चीज़ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। या इंडिया क्रिकेट में हो, भले वो वॉर के हिसाब से हो, भले वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, बहुत कुछ है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को साइड रखते हैं। या हम हेट नहीं बांट रहे यहाँ पे, हम एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहे। ये सिर्फ एक रिएक्शन चैनल है और मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है दूसरी कंट्रीज़ के बारे में जानने का। मैं बी पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि बहुत से जानने वाले हमारे, हम मेरे घर से थोड़ा सा आगे रहते हैं, वो इंडिया से आना जाना है उनका, वो इंडिया से आते हैं जाते हैं, उनके रिलेटिव रहते हैं। तो उनसे मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है और मेरा बहुत कुछ मूड है हाँ गोवा जाने का, दिल्ली देखने का। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि हर मुल्क के अंदर अगर जो हमारा मीडिया दिखा रहा है वही हो। और मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी इंडियन के रिएक्शंस देखे हैं, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी पाकिस्तानियों के इंडिया के हवाले से देखे हैं, लोगों की ब्लॉगिंग देखी है जो पाकिस्तान से इंडिया के हैं या इंडिया से पाकिस्तान आए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हेट सिर्फ मीडिया की तरफ से है या फिर पॉलिटिकल इशू की वजह से है। तो इंसान ही यार थोड़े बुरे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे नफरत करनी पड़े। तो बहरहाल ये बहुत लंबा डिस्कशन है, अगर हम इस बारे में बात करें तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। So here we go. मोहम्मद अली जिन्ना। India and Pakistan are two countries that probably have one of the biggest love-hate relationships in the world. In fact, if you think about their relationship and compare that to what people say about women, you'd say, you can't live with them, you can't live without them. Welcome back to another episode of FTD Facts. My name is Leroy Kenton. This is a channel where we talk about everything and everything, and this is a pretty exciting one. I'm going to be talking about Indians and Pakistan's. What's the big difference here? Because like myself and many other people from the West, for the most part, we actually have no clues. So I did some digging just to find out what exactly makes Indians and Pakistanis different. So to begin, we gotta do a little bit of a history lesson. So you ready for this? The Indian subcontinent used to be ruled by the British Empire for almost 200 years, but when World War II ended, the British were in no position to hold on to their stronghold over the Indian subcontinent. But the British didn't leave before partitioning the Indian subcontinent into two separate nations, India and Pakistan. On the date of August 14, 1947, Pakistan became an independent country. However, there was no correct way to divide the line with the Hindu majorities as well as the Muslim majorities. How do you divide that? There was a mixture of people of different faiths all over the Indian subcontinent. Because of this improper partitioning of the Indian subcontinent, there was mass-scale casualties on both sides. Violence broke out all over the country, and the partition left over 1 million dead, and almost 20 million people were displaced from their homes. It's been almost 70 years since this separation, and it goes without saying that the last 70 years haven't been the easiest for either countries. Both of them had to overcome hurdles and challenges, and had to really work hard to get global recognition in many different fields. So we have a little brief history lesson. If you want to find out more about the Indian and Pakistan partition, you got to check out our video, The Truth Behind the India-Pakistan Conflict. I have the link to that down below. I go in a lot of detail about it. But moving forward now, let's take a look at some of the cultural differences, the language differences, as well as there's some differences that exist only because the two places are now two separate countries. But they're not really major differences, it's just the fact that they're two different countries, that's why those differences exist. Now the population of India at the time of filming this is 1,342,552,725. Wow. Pakistan's population in comparison is 196 million,
754,400 people. India is considered a secular nation, whereas Pakistan is considered a Muslim state. And just to give you a little bit of background about that, India was conceived as a secular democracy by National Congress leads such as Gandhi and Jawaharlal Nehru. It was meant to guarantee all the people in the South Asian subcontinent political and religious freedom. However, people like Muhammad Ali Jinnah, considered to be the father of Pakistan, as well as other Muslim Congress leaders, were the driving forces behind the formation of Pakistan, and so it became a Muslim state. And speaking of that, actually, one of the biggest differences between the two countries is religion. Although India is considered a secular nation, by majority, 80% of people identify as Hindu, while of course the majority of people in Pakistan identify as Muslim. It's also interesting to note that Pakistan has the second largest Muslim population in the whole world. Now, one thing to address, and I know the point may be a little controversial, but there's no specific single Pakistan culture separate from a specific Indian culture. It's like having a plate of food, you know, with your rice, chicken, and vegetables, and that plate of food is divided, and then now it's like, oh, we were once the same plate of food, but you have more chicken, so therefore the chicken is your culture. Wait, but that was part of my culture. Yeah, probably not the best analogy, but I think you get the point. Pakistan alone is 5 times smaller than India, and there's about 300 dialects and languages. The count for dialects and languages in India number over 1,500. But let's take a look more into the language differences. There's 2 official languages for communication in Pakistan, and those are Urdu and English. Now, there are several regional languages of Pakistan, and those are Sindhi, Punjabi, Baluchi, Pashto, Saraiki, Godri, and Hindko. But the national language of Pakistan is Urdu. When it comes to the languages in India, the 2 official languages for communication in India are English and Hindi. And yes, there are also regional languages, and those are Gujarati, Marathi, Tamil, Urdu as well, Sanskrit, Punjabi, and there's many more. And the national language in India is Hindi. The national animal of India is this guy, the Bengal tiger. The markhor is the national animal of Pakistan, and I had to look this up, and it's a species of goat. I've never heard of this before until this video. In terms of currency, Pakistan uses Pakistani rupees, India uses Indian rupees. Pretty self-explanatory. The most popular greeting in Pakistan is Assalamu alaikum. India, there are several like Namaste, Ram Ram, Jai Sri Ram, and Sat Shri Akal. Now let's talk about the difference in death. Pakistan, after the death of any Muslim, the body actually needs to be buried as quickly as possible from the time of death. This is according to Islamic law. To prepare the body for burial, it has to be washed and covered with kafan. And kafan, you can also call that a shroud or a cloth. Now in India, when a Hindu dies, Hindus don't necessarily bury their bodies. Instead, they're burnt. And after the burning of the bodies, the ashes are sprinkled in the Ganges River or any other sacred body of water. Now, finally, let's talk about the cuisine, the food, the good stuff. As you can tell, India is a big place, right? One of the biggest populations on the planet. And of course, it used to be bigger. It consisted of the areas that are now Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, formerly Burma. So the notion of Indian food is not entirely accurate to begin with. Also, the term Pakistani cuisine is a little bit vague too, because Pakistan didn't exist as a nation until 1947. But for the sake of them now being 2 different countries, we can make a little bit of a distinction here. Pakistani cuisine can be considered a subset of Indian cuisine, but even that subset is pretty diverse, in the sense that the spices and the ingredients in Indian and Pakistani food are pretty much the same, but the way the food is prepared can be quite different. For example, the kind of food that you would find being cooked in a South Indian home would be dal, rasam, sambar, etc. It's completely different from Pakistani kebabs. So in many Pakistani dishes, it's very meat heavy, but there's a difference between those meat heavy dishes and the vegetarian dishes in some parts of India. So yeah, again, describing something as Indian food and Pakistani food is a bit tricky because food isn't necessarily national, it's more regional. Don't think anyone can be like, no, this is Indian food, this is Pakistani food, 2 different things. It's just not possible.
So there you guys go. These are some of the differences between the two countries, Pakistan and India. We see that the certain fundamental belief systems of each country sort of color the whole culture of each country. But one thing to remember is that there's no better nation because better is subjective, it's not objective. So rather than nitpicking someone else's culture or religious beliefs, let's aim to really understand where they're coming from because despite everything else, we're all the same but different. We're the exact same in the fact that we're human beings, but different in the fact that we're all individuals and have different self-expression. So I say to all of you, my brothers and sisters, I love and appreciate all of you for simply being you. I may not agree with everything that you guys have to say, and you may not necessarily agree with everything that I have to say in terms of a personal perspective, but if you are a person living on this earth, you have some value. And never let anyone tell you that you're worthless, all right? So I say to all my Pakistani and Indian viewers, as well as wherever else you're watching from, peace. काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी। और जो फैक्ट इस वीडियो में बताया गया ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें ये सब चीज़ें पता है कि किस तरह हिस्ट्री में क्या क्या कंक्लूजन्स थे, क्या क्या चीज़ें हुई, कितनों ने ज़िंदगी लॉस की, कितने ज़िंदा रह गए, क्या क्या सेक्रीफाइस देने पड़े, ये सबको पता है। ऐसा कुछ न्यू नहीं है। हम हिस्ट्री अब तो इतना यार मॉडर्न दौर है, आप गूगल पे एक टाइप करो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने उस हिस्ट्री को देखा है, जो उस टाइम के लोग हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, उनसे सुने, तो बहुत डिफरेंट लगता है गूगल के हिसाब से और लोगों ने जो देखा है। वेल, बहुत लंबी कहानी है। दोनों मुल्कों में लोग रहते हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम है, यहाँ पे भी हिंदू हैं, वहाँ पे मेजोरिटी है। वो जो एक डिफरेंट चीज़ है क्योंकि मेजोरिटी जिस कंट्री के जिस हिसाब से उस हिसाब से ही है। इस तरह आप अमेरिका चले जाएंगे, ज़्यादा पे आप क्रिश्चियंस मिलेंगे, अब तो वो आप चाइना चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, हर कंट्री में अपने हिसाब से है। जो मेजोरिटी जो मेजर रखती है वही है। बहरहाल, लेकिन फैक्ट ये है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो के अंदर थी कि आप सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाली बात ही नहीं है कि मतलब आप ये बोल रहे हैं क्या नाम है, हम बेटर हैं या वो बेटर है, दोनों बराबर है। अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या हमारी कम है तो फ़र्क नहीं पड़ता। दे रहे इंसान ही रहे वहाँ पे। और हर बंदा अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने हिसाब से कुछ करना चाहता है। रही बात रिलीजन्स की, तो हम उनके रिलीजन के एहतराम करते हैं, वो हमारा करते हैं, हम यही कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम उनको तकलीफ पहुँचाएं या वो हमें तकलीफ पहुँचाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भले कितने ताकतवर हो, कितने पावरफुल हो, आप खुदा से नहीं लड़ सकते, किसी से लड़ते। जो निज़ाम बन चुका है वो बन चुका है, वो होना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत लंबी ब्रीफ है इस चीज़ के ऊपर। अगर मैं इस फैक्ट के ऊपर बात करूँ कि इंडिया है, पाकिस्तान डिफ्रेंशिएट और क्या क्या है, मेरे हिसाब से वही बात सही है। तो खुश रहें, दूसरे के साथ रहें, कोई इशू नहीं है। मीडिया पॉलिटिक्स इनको साइड पे कर दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल, रियली अप्रिशिएट दिस वीडियो, मुझे बहुत पसंद आई। और मैं और भी कोशिश करूँगा अगर मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलें इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। अगर मेरी तरफ से ये हो सकता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में जो लोग हैं उनके तक अच्छा मैसेज जा रहा है या फिर वो एंटरटेन हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ बुरा लगा तो सॉरी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइबर्स, अल्लाह हाफिज़।